Good evening to everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible to everyone? We'll start a class in 3-4 more minutes until everyone joins. I hope there is no kind of delay in my voice and the PPT. Let me change it to check, right? Is the voice fine now? Someone was saying that I'm quite volume is quite low. So is it okay? Yeah, slides are not visible because I'm not moving. I'll move the slides and then probably you will able to see. So welcome everyone to Synapse Career Institute, which provides almost free
online classes for CSR GATE, TIPPER, DBT, and ICMR students for the life sciences subject. So I am Mayank this side, and today we will be discussing about cell biology. I would be taking, so let me give you the syllabus. So this is the syllabus which I would be dealing with. That would be my portion, right? So I would be dealing with the unit 2 of the CSR syllabus, right? To be precise. Halaki, it's almost common with that of GATE and almost all stuff. So we would be covering Unit 2 cell organization, in which we would be starting with our first topic, that is membrane structure and function. Right? And this is the first. So this will be the first module that I would be covering. Then this would be the various cell organelles that we would be covering in subsequent classes in the cell biology portion. Then the genes and operons portion that would be covered by Shubham sir in molecular biology syllabus, right? So this would be covered by in molecular biology, right? And then we would be looking at cell division and cell cycle, and this you will be learning in plant physiology. Some plant teachers would be covering this portion, right? So this is the second unit, and also fourth unit I would be taking, which is cell signaling and cell communication, right? In which I would be dealing with cell communication, both junctions and cell communication. Then we would be dealing with cancer biology, the entire cancer biology, and immunology. So I would be dealing with this syllabus in subsequent classes. So I would be starting with the first topic today, that is cellular organization, that is membrane structure and function. So today is the first class that would be discussing about membrane, cell membrane to be precise. Is the voice now audible? Because some are saying to please be a little louder. Yes. Okay. Thank you for the response. Okay. So this is the first topic that would we be covering. That is module 1, membrane structure and transport. So we'll be talking in today's lecture. We would be talking about the membrane structure and the composition of the membrane. However, since there are many components of the membrane, so we would be talking only one component, that is membrane proteins, in today's class, right? So, and I will also like to tell you that since it is a kind of theoretical subject, right? Cell biology is kind of a theoretical kind of stuff. So there are no much figures and thing in my PPT, right? There are, but there are quite less. So I would be writing down the stuff, but on the other hand, I also request you to please take down the notes, right? That I would be dictating also. That probably I would be making some points also that I would be writing in the PPT, right? So it would be better if you will simultaneously write as well as listen to the audio that I'm going to speak, right? Because there are less number of figures that are to be kept in this particular unit specifically, because plasma membrane में such set of structures ही हैं, right? There are certain names to remember, right? So let's get started. I guess there are almost around 50 students right now. Okay.
So first let's talk of what is a cell membrane, right? Cell membrane होता क्या है? So we'll talk about what is cell membrane. So a membrane is specifically, if we speak about points की basic points में अगर हम बात करें तो cell membrane क्या हो सकता है? कोई just brief points में मुझे comment section में बता सकता है कि just a property of cell membrane कि different what are the properties जो कि cell membrane की हो सकती हैं. Please can you mention in the comment section? Okay, dynamic membrane. Yes, absolute. Transportation. Cool. Any other? Let's make the class quite interactive because I don't want कि मैं ही सिर्फ बोलता रहूं और तुम सिर्फ सुनते रहो. So I want that class to be quite interactive. Semi-permeable. Okay. Makes the boundary between extracellular. Cool. Selectively permeable. Provides the structure to the cell. Very nice. Gives the shape. Okay. Thank you. Okay, thank you all for that overwhelming response. Okay, so membranes, अगर मैं simple basic definition की बात करूं, so membranes are quite ultra thin, right? So these are quite basic properties you can say, right? So membranes are ultra thin, they are plastic, that means you can say they are quite stretchable, right? They have quite dynamism in them, right? Then we have dynamic molecular proteins are present in them. Dynamic molecular proteins हो सकते हैं वो, right? So membranes are dynamic molecular proteins, or it can be lipids, or it can be carbohydrates as well, right? Because it is a mixture of all the three. It has proteins, it has carbohydrates, it has lipid, right? So this is the basic composition of a membrane, right? It has all the three things: the proteins, lipids, and carbohydrates, right? What do they perform then? They enclose every type of cell, right? Encloses a cell whether it is a prokaryote or it is a eukaryotic cell. So they enclose any type of cell, either it is a prokaryotic cell or it is a eukaryotic cell, right? And it separates cytoplasm from the extracellular space, extracellular matrix, right? And also it serves as selective permeable barrier, as already many students have mentioned, right? So it also serves as selective permeable barrier, and it performs various roles, right? It has various functions. So some of the basic functions which are involved, right? Some of the basic functions of plasma membrane are they act as receptors, right? So we would be dealing with how membrane proteins are involved in receptor, right? How they function in cell signaling, right? Signal transduction event. Then they also play a role in transport, right? We have transport channels, we have various ion channels and all those, right? It also helps in maintaining the homeostasis, right? As well as it is also maintaining, or it helps in establishing certain diseases, right? Because of the receptors which are present on the plasma membrane. So it also helps in establishing diseases. What kind of diseases is जिनके जो pathogens they use certain receptors present on the plasma membrane, उन diseases को establish करने में help करते हैं, right? Like that we have HIV, we have Alzheimer disease, right? So we have such important roles of the membrane, right? So it is a very necessary thing to study, right? So it is a selectively permeable membrane as shown in the figure, right? And the important roles that are also provided in this particular figure, right?
The screen is not visible clearly. Okay, maybe due to some network error or something. Wait, let me check. How diseases are established? The diseases can be established as the membrane के ऊपर कुछ receptors होते हैं जिनके थ्रू पैथोजन इंटरैक्ट करते हैं, राइट? HIV का रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, राइट? तभी वो अंदर जाएगा. सबसे पहले HIV का इन्फेक्शन, इवन इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, राइट? वी हैव ACE2 रिसेप्टर्स, राइट? राइट, वी हैव ACE2 रिसेप्टर्स जो कि उसके ऊपर टारगेट करते हैं, राइट? एंड आगे सेल एस्टैब्लिशमेंट होती है डिसीज, राइट? I guess some are facing problem with clear, but some are saying that it's clear from their side. Okay, I hope it's now clear for everyone. Please change the pixel quality to 480 as guided by the comment section, so you'll be clearly able to get it. I hope there is no problem now. Shall we continue? Disease examples, we have Alzheimer disease, we have SARS coronavirus, recent example. Okay, so now we have there are different models, right? हमको पता है कि जो मेम्ब्रेन का मॉडल है that was सबसे पहले तब जो recent मॉडल है जो कि accepted में है, that is a fluid mosaic model, right? But before fluid mosaic model there are n number of models that were already provided, right? And on the basis of their conclusions we finally arrived at fluid mosaic model, which is the final latest model that is widely being accepted, right? So there are different models जो कि हम बात करते हैं हमारी मतलब मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डेसिफर करने के लिए जो लगा हमको, राइट? सो सबसे पहला जो मॉडल है, या सबसे पहला जो मॉडल है दैट वाज प्रपोज, दैट वाज इन 1890, राइट? इट इज कॉल्ड एज द ओवरटर्न मॉडल. It is called the overturn model, right? It was proposed in 1890 and this model observed that the lipid is covering on the membrane. That is, we have a lipid covering on the membrane, right? So the observation, the scientists who proposed this model, right? So the observation was that lipid covering is seen in. Please note down the words that I'm also speaking because I'm not writing each and everything because it would create a kind of long notes. So also please focus on what I'm speaking because maybe there are chances ki I miss some point. I have spoken but I miss something in writing, right? So it would be better to please listen also as well as prepare the notes simultaneously, right? So we would be pointing मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट पे हम बात करेंगे. हम कुछ काइंड ऑफ जितना सिलेबस के लिए जितना CSR के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको एज वेल एज क्वाइट सम एक्स्ट्रा चीजें, राइट? सो वी वोंट बी मेकिंग इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू स्टडी. ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या थी? लिपिड इज कवरिंग द मेम्ब्रेन, राइट? एंड they also identified the lipid composition. They said that the lipid that is covering the membrane is made of cholesterol and lecithin. It is made of cholesterol and lecithin, which are some of the steroid molecules, right? Lipid molecules. And as a result, so what they proposed, so this was the first observation that they provided, and then what is the result that they gave? They provided the result. उन्होंने बताया कि जो लिपिड soluble substances हैं, since lipid membrane के ऊपर cover करती है, तो lipid substances can easily pass. Lipid substances can easily pass through the membrane, right? And lipid insoluble substances cannot pass. Insoluble substances, insoluble
cannot pass. So this was the basic observation of the overturn model proposed in 1890. Then the next model came, that was Irwin-Langmuir model. Irwin-Langmuir model. It was proposed in 1910. Right? It was proposed in 1910, and it said that the membranes are monolayers. Right? This model, which was proposed in 1910, said that the lipids are monolayers. Right? And they are amphipathic in nature. And they are amphipathic in nature. So what is the meaning of amphipathic? The amphipathic is the molecules that are both polar as well as non-polar. Right? So we have the मतलब जो polar भी होते हैं जो non-polar भी same molecule के अंदर we have a polar group as well as a non-polar group. Right? So if I say what is a polar group, right? So polar group is nothing but a hydrophilic group, right? That is which loves water, right? Water loving, yeah, water attracting. Then we have non-polar groups which are hydrophobic and they are water hating, right? And कोई भी best example अगर मैं polar molecules का लूँ, we have water, acetone, there are many examples, right? So I have acetone, water, right? And hydrophobic group के अंदर we have many molecules, right? We have propane, ethane, all these are all hydrophobic molecules. So 2-methyl propane कुछ भी बोल लो, right? So we have a number of examples which are non-polar molecules. So we can say non-polar molecules can pass through the membrane, whereas polar molecules do not, right? And the Irving-Langmuir model in 1910 said that lipid molecules are monolayer, but they are made of they are amphipathic in nature. That is, they have both polar group as well as non-polar group, right? Okay. So one of the best examples is we have phosphatidylcholine, which is nothing but a membrane lipid, right? So we have phospholipid, which is nothing but phosphatidylcholine, right? So it has both polar group as well as a non-polar group, right? It has both polar group as well as the non-polar group. So अगर मैं बात करूं पोलर ग्रुप जो है वो किसकी वजह से आ रहा है एंड नॉन पोलर पार्ट जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है तो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर और इफ आई explain you a kind of in brief, right? So the structure of phosphatidylcholine is quite like this, and there are some lipid molecules for which you should know the structure, right? Because of their properties, which are very important. We will be looking about all the phospholipids in next subsequent classes. Today we are probably major we will be looking at proteins, membrane proteins. However, since so this is quite the structure of a phosphatidylcholine typical molecule, right? In this phosphatidylcholine, if we see this portion, entire portion
is polar part, and this entire portion is a non-polar or hydrophobic part, right? Because it has some charges in them, positive charge, negative charge here, right? So we have positive charge and negative charges. So because of that, we have polar portion as well, and we have non-polar portions, non-polar side as well, right? So this is about Irving-Langmuir model, which proposed the amphipathic nature of the molecule. So first, this was the okay. Next was the Grotter and Grendel model, which was proposed in 1920. The next model is Grotter and Grendel, which was proposed in 1920, and it said that membrane are bilayers. This said that membrane are bilayers, and they composed of two lipid layers. One is the outer membrane and one is the inner membrane, right? Okay, so and the model that they selected is RBCs, red blood cells. So why they worked on RBCs is because of its simple structure. The first is simple structure. Then they do not have any internal scaffolding, right? They only have certain substances or heme proteins जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, right? They don't have any other kind of complicated stuff. There is no nucleus. So because of that, the RBCs are a very good model to study the structure of plasma membrane, right? So because of that, they choose plasma membrane as their basic model. Then the next model that was proposed by Davison and Dennelly model, which paved way to have proteins included in them, right? After this, it was Davison and Dennelly. Davison and Dennelly model, which was proposed in 1935. According to this model, according to this model, it proposed that the membrane is bilayer. It proposed that the membrane is bilayer, right? But it is coated with proteins on either side. That means if I say, right, if I make the structure, so the Davison and Dennelly model proposed that the membrane is bilayer, but it is coated by proteins on either side. So we have protein, we have lipid in between, then we have protein on the either side, right? So we have PLP, protein, lipid, and protein. So this model is also called as protein, lipid, protein, or PLP sandwich, right? It is also called as PLP sandwich model, yeah, sandwich model itself, right? Is everyone with me? I guess. Okay. So the next model that was proposed was Robertson model. What is the Robertson model? The next model that was proposed was, just a second, clear this. The next model proposed was Robertson model. And this paved the way for this Robertson model paved the way for analyzing the complete structure with greater detail. Means you have the uh, length कि कितना membrane का size होगा. All this structure was demonstrated by Robertson model. So the next was Robertson model, which was proposed in 1950s, right? So it is a kind of history only. इतना कुछ ऐसा समझने का है नहीं, right? However, the Robertson model was also called as the unit membrane model. Unit membrane model. Why it is called the unit membrane model? Because Robertson, what he did was he used a heavy metal, that is osmium tetroxide. He used osmium tetroxide, right? And treated
treated different kinds of cells with osmium tetroxide, which is a heavy metal, you can say heavy or dense metal, right? And what he observed was the railroad-like structure. I repeat, it was railroad-like structure, right? Railroad means, that is, he observed a dark stained region, a light strain region, that too in the alternate forms, right? जैसे कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच दिखा था डेविसन डेनिली में, same case, he observed the dark strain, the light staining, then again the dark staining. So we can also say that the Robertson model also provided a kind of evidence or a kind of validity to Davison and Denelli model that there are proteins which are lining the lipid layer, right? So the railroad-like structure was performed. However, when he observed he treated different cells with this same osmium tetroxide, which is a heavy metal, right? What he observed was, he observed that all the cells, different kind of cell membrane, he observed that it was the structure that was there was same, right? It was almost similar kind of structure for all the membranes, right? He used RBCs, he used other cell types, right? And he treated them with osmium tetroxide. However, what he observed was that the underlying structure, the basic structure, was the same, that is the trilamellar structure. Trilamellar structure. So what he observed is the trilamellar structure, that is the dark region, the dark staining region, the light staining region, right? And he also calculated the distance, that is the total membrane, that is both including bilayer, both the layers, inner layer and monolayer. He observed that the total length of the membrane is 6 to 8 nanometers. 6 to 8 nanometers. Now since all the different cell types were showing that कि ये यूनिट मेम्ब्रेन है, मतलब ये सबका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ट्राइलेमुलर है, that is why the Robertson model is also called as the unit membrane model. Unit means one. So he proposed one kind of structure for all the membranes, right? For all different cell types के लिए सारी membrane के लिए उसने propose किया कि एक ही model है, right? So that is why the Robertson model is called as the unit membrane model, right? See, someone is asking if it is trilamellar, then why it is called bilayer? Bilayer अभी तक आया नहीं. They propose that कि ये पहली यहाँ पे लेयर जो है वो प्रोटीन की है, राइट? फिर एक लिपिड की लेयर है, फिर उसके बाद अगेन प्रोटीन की लेयर है. That is why it is calling as trilamellar. However, it was cleared after Robertson model कि ये trilamellar नहीं है. जो प्रोटीन है वो लेयर फॉर्म में नहीं है. प्रोटीन इज embedded in them in subsequent जगह पे, पूरी ऐसे लेयर में नहीं है, फिक्स नहीं है, बट बीच बीच में से ऐसे कहीं कहीं पे प्रोटीन प्रेजेंट है. सो इट इज नॉट अ लेयर, right? Hence it is called as a bilayer, right? It is not a trilamellar structure. Trilamellar he proposed, but he was quite wrong after the next model, Robertson के बाद जो next आएगा उसने उसको गलत प्रूफ किया कि ये trilamellar नहीं है. It is bilayer only. Proteins are not in the form of layer, however they are in the form of mosaic compartments kind of stuff, right? I hope I cleared the doubt, Nishtha. Yeah. So after that, what happens? Drawbacks of the earlier model. In 1950, right? What happened? In 1950, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, राइट? इन 1950 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और ये सारा का सारा जो भी पुराने मॉडल्स थे वो सब खत्म हो गए, राइट? बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट वर बीइंग identified, right? The drawbacks were identified because of the electron microscope discovery. तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर वर काइंड ऑफ मेनी ड्रॉबैक्स दैट वर कैलकुलेटेड, जो कि अर्लियर मॉडल्स में हमको दिखते थे, राइट? इसी के बाद हमारा जो न्यू मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वो आया, right? So what was the major drawbacks of the earlier model, which was identified by the electron microscope, which was
discovered or which was invented in 1950, right? So the first one is the membrane की dimensions, right? So membrane dimensions में क्या था, रॉबर्टसन मॉडल ने, मैंने आपको बताया कि उसने बोला था 6 to 8 नैनोमीटर्स की जो है वो मेम्ब्रेन का साइज है, right? Or it is trilamellar in structure. According to Robertson model, he suggested it is 6 to 8 nanometers and trilamellar structure, right? However, during microscope studies, what was identified that from this 6 to 8 nanometers, this 6 to 8 nanometers में से, what he found that the electrons studies was found that microscope studies found that कि 4 to 5 nanometers of this 6 to 8, only 4 to 5 nanometer was the lipid composition, only lipid composition, right? Only 4 to 5% were lipid, whereas 1 to 2 nanometer layer that was present, that was the proteins on either side, proteins on either side, right? So 6 to 8 में से 4 से 5 नैनोमीटर सिर्फ लिपिड था, and 1 to 2 nanometer were the proteins which are present on the either side. So they thought that on the basis of this thing, they thought that the protein इस मोनोलेयर के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो बीटा शीट में होना चाहिए, because it is very thin, 1 to 2 nanometer, it should be in beta sheets, right? It should not be in a globular form, right? However, on extracting the proteins, they found that कि बीटा शीट में जो extracted proteins थे वो बीटा शीट में नहीं थे, they were in the form of globular proteins, they were in the form of globular proteins. So on the basis of this thing, what they identified, they suggested that key proteins must be protruding inside the membrane and not forming the layer, right? On the basis of this microscope studies, EM studies, what they found that कि जो आपका प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोट्रूडिंग इनसाइड, राइट? दे आर प्रोट्रूडिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन, ना कि दे आर फॉर्मिंग लेयर, right? So they are protruding inside the lipid bilayer. So this was the first major drawback that was identified based on the earlier models, and it was also corrected by suggesting that कि जो proteins हैं वो bilayer की form के अंदर protrude कर रहे हैं, ना कि किसी layer की form में है, right? Hence यहाँ पे trilamellar का portion खत्म हो गया था, right? अब से हम इसको फिर bilayer model बनाएंगे, because lipid की layer है ना कि protein की layer, lipid की layer के अंदर proteins are embedded in it. Okay, so what is the next drawback that was found? So the next drawback that was identified was the membrane composition. According to Robertson model again, it said that the membrane का जो structure है वो unit membrane है, right? रॉबर्टसन ने बोला कि यूनिट मेम्ब्रेन, दैट मीन्स कोई भी सेल टाइप ले लो, उसको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ करोगे तो सेम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर आ रहा है मेन, दैट इज रोल रेड लाइट स्ट्रक्चर. हाउएवर जो कॉम्पोजिशन स्टडीज जब करी गई थी, राइट, तो दे फाउंड दैट कि जो प्रोटीन लिपिड रेशो है, प्रोटीन लिपिड रेशो वो हर जगह पे डिफर कर रही है, डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर इट इज डिफरिंग, राइट? सो दे फाउंड दैट कि बैक्टीरिया के अंदर दे फाउंड जो पीएल रेशो थी, प्रोटीन लिपिड रेशो थी, वो बहुत ज्यादा थी, 3 की थी. दैट मीन्स इट हैज वेरी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, राइट? वेराज अगर मैं न्यूरॉन्स में बात करूं, न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ में, न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ के अंदर द प्रोटीन लिपिड रेशो वाज 0.23, इट वाज वेरी वेरी लो. सिमिलरली ये तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स काइंड ऑफ हो गया, वो बैक्टीरिया के अंदर या ह्यूमंस के अंदर. इवन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं, राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन,
उन दोनों के अंदर भी प्रोटीन लिपिड रेशियो का कॉम्पोजिशन जो था वो डिफरेंस था, राइट। तो आउटर मेम्ब्रेन का जो रेशियो था दैट वाज 1.2, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन लिपिड रेशियो था दैट वाज अराउंड 3.5. That suggested that there are more number of proteins which are present on the inner membrane, and we also know that कि यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, राइट। आपके बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, F1 F0 पार्टिकल, there are different kinds of proteins which are present on the inner membrane. Because of this the PL ratio was quite very high, right. So this was the kind of second drawback that was proposed because of the earlier models, जो कि कब realize हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1950, right. Okay, after that जो मैंने आपको मोज़ैक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन बताया ऑलरेडी, राइट। अनदर स्टडी के अंदर एक ये देखा गया कि अच्छा अगर जो प्रोटीन है, राइट, अगर प्रोटीन है, सपोज ऊपर प्रोटीन की लेयर है अगर, राइट, जो कि रॉबर्टसन मॉडल और डेविसन डेनली मॉडल ने बोला, राइट। तो अगर मैं इसको फॉस्फोलाइपेस के साथ ट्रीट करूं, मेम्ब्रेन को इफ आई ट्रीट विद फॉस्फोलाइपेसेस, व्हाट शुड हैपन, देयर शुड हैव बीन नो ऑब्जर्वेशन, राइट, बिकॉज ऊपर तो प्रोटीन की लेयर है, बीच में लिपिड लेयर है, राइट, एंड फिर से नीचे प्रोटीन की लेयर है। इफ आई एम ट्रीटिंग द एंजाइम विद फॉस्फोलाइपेसेस, व्हाट मस्ट हैपन, क्या होना चाहिए था? एनीवन? If I treat the membrane with phospholipases, according to Robertson model, what should be the observation and what should have been the result? Yes, it should not break. No change must happen. If protein was there, no change must happen. Right. However, what was observed was कि जो लेयर है, लिपिड लेयर, राइट, जो लिपिड ऑब्जर्व क्या हो गया कि जो लिपिड की लेयर है, lipid layer got disrupted. Lipid layer got disrupted. Again, this indicated that कि जो प्रोटीन है वो लेयर की फॉर्म में नहीं है, बल्कि it is in the form of mosaic globular proteins kind of embedded in the membrane, right? So it is not in the form of layer, either it is in the form of globular proteins which are embedded in the membrane at certain locations, right? So based on all these observation, all these drawbacks and everything, what was proposed was the fluid mosaic model in 1972. Based on all these drawbacks, what was proposed that the fluid mosaic model in 1972. It is also called as the iceberg model. It is also called the iceberg model. Why it is called the iceberg model? It is called the iceberg model because the scientist और किन्होंने दिया था ये, it was given by Singer and Nicholson. So I'll say again Singer and Nicholson because ये तो बहुत important kind of है. Singer and Nicholson in 1972 proposed the fluid mosaic model, which is also called as the iceberg model. It was called so because they assumed a lipid layer, lipid की सी है, उसके अंदर जो बर्फ है, icebergs हैं, वो क्या है, वो एक तरीके के प्रोटीन है. Hence it is also called as the iceberg model, right? So it was proposed by Singer and Nicholson in 1972, and it described the mosaic arrangement of proteins, which was identified as a drawback from the earlier models, right? It also, सबसे पहली चीज इसने क्या आइडेंटिफाई की, इसने बताया मोज़ैक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, लेयर पोर्शन हट चुका है, मोज़ैक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, right? And it also proposed the fluid, since the name is there, fluid mosaic model, that means it proposed the dynamic nature of the membrane, dynamic nature of membrane,
right? It proposed the dynamic nature of the membrane. Okay, so if in brief, if I talk about what are all the proposals that the fluid mosaic model gave, that was the phospholipid is, I'll change the color, right? क्या है phospholipid, क्या है bilayer है, राइट, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, हाइड्रोफोबिक कंपार्टमेंट्स भी हैं, हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट भी हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, एम्फीपैथिक में है, राइट, इट इज एम्फीपैथिक. Then it proposed certain proteins which are there. It also proposed glycoproteins, right? It proposed the lipoproteins, that is the proteins which are associated with the lipids, lipoproteins in the membrane, right? Which are present on both the sides of the membrane, either in the outer membrane or in the inner membrane, right? It proposed the asymmetric nature of the plasma membrane. Asymmetric nature of plasma membrane. What is the meaning of asymmetric? is asymmetric means जो inner layer है और जो outer layer है, उन दोनों के अंदर हमारे composition की फर्क है, right? जैसे कि हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ा कि the PL रेशो जो था वो inner layer में ज़्यादा था और outer layer में कम था, right? So it also proposed the asymmetric nature of the plasma membrane, or it also provided the fluid या dynamic nature we can say of the fluid nature. और ये fluidity किसकी वजह से आती है? ये fluidity आती है और it can be affected by temperature, right? It can be affected by composition, as said, right? Composition of the lipids as well as cholesterol. We will be discussing about the membrane fluidity in greater detail in subsequent classes, right? So these were the basic conclusions for the fluid mosaic model, right? I hope everything is clear till now. It was quite a basic kind of thing, I guess everyone would have heard of, right? Okay, so shall we move forward? So now I'm going to talk on the membrane composition, right? My next topic would be the membrane composition. That means how membrane is made and what are all the constituents of the membrane and why are they present in the membrane and what is their function, right? So we would be in the starting only I told कि किससे बने होते हैं membrane में, हमारे पास proteins होती हैं, हमारे पास lipid होते हैं और हमारे पास carbohydrates होते हैं, right? So we would be dealing with proteins today. I would like to complete the protein part, right? ओके, सो मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन के अंदर हम बात करते हैं, हमने पहले ही बात किया कि जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है, बिकॉज एट केमिकल लेवल वी सी दैट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो तीन कंपोनेंट से बने हैं, राइट? तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव लिपिड्स एंड देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट. एंड अभी एसिमेट्रिक नेचर के बारे में हमने बात की थी, राइट? तो एसिमेट्रिक नेचर के बेसिस पे ही हम बताते हैं कि आरबीसी के अंदर कितना प्रोटीन है. आरबीसी कंसिस्ट ऑफ अराउंड 52% ऑफ प्रोटीन, 40% ऑफ लिपिड्स एंड 8% ऑफ carbohydrates only. In nerve fibers or neurons, we have 18% of proteins, 79% and 3% lipids and carbohydrates respectively. Okay, I'll try to write with some clarity. I'm sorry. Right? Then we have thylakoid membrane, जो कि plant में है, right? तो thylakoid membrane के अंदर 70% is proteins, 30% is lipids, and 0% is carbohydrate. There are no carbohydrates, right? Then mouse liver cells.
membrane, we have 42% proteins, 53% lipids, and 5% of carbohydrates. Similarly, plant cell membrane, we have 40%, 40%, and 20% of proteins, lipids, and carbohydrates, respectively. So we have, as we can see, there is an enormous differentiation between different cell types and the membrane composition, right? So we have a different role जो है कि हर मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की रेशियो डिफर कर रही है एंड मेम्ब्रेन में देयर इज एन asymmetry, right? So today we are going to learn about in more detail about membrane composition, that too with specifically respect to proteins, right? So we will be looking about what are all the different kinds of proteins which are involved, different means कैसे कैसे they are functioning in the membrane, stability, shape, and permeability, all those stuff, right? So we have different functions. So I'll be starting with membrane proteins now. So membrane proteins functions as transporters. They functions as anchors, right? They provide support. They are used in signal transduction, so they are involved in receptor, right? Disease establishment. Then they are also as an enzymes, right? There are many enzymes which are present on the membrane, like we have already discussed in the mitochondria, right? So examples of some of them are given here. तो transporters के example अगर हम देखें तो sodium है, potassium pump है, there are many n number of pumps, right? So which pump sodium out and potassium inside, right? Then we have anchor proteins which are also present in the membrane, right? Which provide stability, right? As well as which help in anchoring other cellular substances, right? Then we have receptors which are involved in cell signaling, right? So we have platelet derived growth factor, we have G protein coupled receptor, we have a number of receptors, right? जो कि membrane के ऊपर हैं, cytokine receptors and number of, right? So they bind to the particular ligand and they undergo a signal transduction event, right? Then we have certain enzymes जो कि adenyl cyclase हो गया, बहुत सारे enzymes हैं, right? Which are involving a role as signaling molecules or which are part of a kind of production of intercellular responses which are involved in, right? Okay, so now we are talking about membrane proteins. There is this 79 or 71. This one, it is 79. I am sorry for the bad handwriting. Okay, so next is the membrane proteins. So we have, depending upon the affinity, so depending upon the affinity, क्या membrane की affinity है और association with the bilayer, affinity with bilayer, lipid bilayer, हमारे पास जो प्रोटीन है, membrane proteins हैं, वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. Basically we majorly classify them in 4 different categories. The first one is intrinsic membrane protein. Intrinsic membrane proteins, they are also called as integral membrane proteins, right? The second we have is extrinsic membrane protein. Extrinsic membrane proteins, which are also called as peripheral membrane proteins. Peripheral membrane proteins. The third we have is protein anchor proteins. Protein anchor proteins. And the fourth we have is lipid anchor membrane proteins. Lipid anchor membrane proteins.
right? So we have four different kinds of lipid membrane proteins, we can say, in the plasma membrane. So we have intrinsic membrane protein, we have extrinsic membrane protein, we have protein anchor proteins, and we have lipid anchor membrane protein, or LAMPs बोलते हैं हम इनको, right? And all of them play a very important or different kind of role in their function, and as well as they have different kind of structures. So on the basis of how they are organized in the membrane, how they are attached, or they are how they have the good affinity with the membrane, we divide them on the basis of these four classes. So we have, now we'll move on with each and every one, right? हर एक एक को हम डिटेल में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में. सो हमको पता है प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन इज अ स्ट्रेच ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होगी, राइट, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगी. दैट पार्टिकुलर पार्ट of the lipid of the polypeptide is called as the transmembrane segment. The transmembrane segment, that part of the polypeptide which would be embedded in the membrane, right, that would be interacting with the lipid bilayer inside, right, hydrophobic environment, that is called as the transmembrane segment. And this transmembrane segment के अंदर जो proteins हैं, right, so the amino acid residues हैं, they are hydrophobic amino acids, right. And hydrophobic amino acid कौन से होते हैं हमारे? Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, proline, all these stuff, right? So they are rich in hydrophobic amino acids. The transmembrane segment is rich in hydrophobic amino acids, right? And also they are majorly in the shape of, or in the secondary structure of, alpha helices, right? They are majorly in alpha helix secondary structure, right? So can anyone tell me why they are in alpha helix structure, not in beta sheets or in any other? Alpha helix and beta sheets there, but the majority are in alpha helix. Can anyone tell me just a basic difference why they are in alpha helix form? Major transmembrane proteins or integral membrane proteins are in alpha helical form. Why? For compaction. Okay. Any other? Only one response, Priyanka? और किसी ने कुछ जवाब नहीं देना? My question is, the transmembrane proteins are majorly in the form of alpha helix. Why not beta sheets? They are in beta sheets, examples are there, but majorly are there in alpha helix. Why? It allows molecules to pass through. Okay, तो beta sheet allow नहीं करता. Okay, चलो let's move, not a problem. So alpha helix इसीलिए होता है because जो hydrophobic side chain है, right, it is not favorable for the interaction with water molecules, right. The hydrophobic side chain जो होती है, जो hydrophobic side chain है, वो इतनी favorable नहीं है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, इसीलिए लिपिड एनवायरनमेंट को ज़्यादा फेवर किया जाता है. यस, स्वयं मान सिंह, excellent. To form channels, right? He has mentioned good. Formation of channels, right? Excellent. Yeah. So the hydrophobic side chain cannot form the favorable interactions with water molecules, right? So they prefer the lipid environment. However, जो पेप्टाइड होती है, राइट, देखो यहाँ पे पेप्टाइड में आप देखो, पेप्टाइड के अंदर पोलैरिटी है, राइट, दे आर पोलर इन नेचर, राइट. पेप्टाइड के अंदर
हाइड्रोफिलिक बैकबोन होती है, इट इज अ पोलर बैकबोन, राइट. एज वाटर इज एब्सेंट फ्रॉम द बाइलेयर, बाइलेयर के अंदर पानी नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक है, राइट. अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है, बाहर पोलर है, राइट. सो जो पोलर पोर्शन है पेप्टाइड बॉन्ड का, राइट, एज अ वाटर इज एब्सेंट फ्रॉम द बाइलेयर, जो अंदर के एटम्स हैं ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड के जो अंदर के एटम्स हैं, दे टेंड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, they tend to form intramolecular hydrogen bonds, intramolecular hydrogen bonds. अल्फा हेलिक्स के अंदर जो पेप्टाइड सिंस पोलर है लेकिन अंदर पानी नहीं जा सकता, राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट दे टेंड टू फॉर्म intramolecular hydrogen bonds, right, which is maximum or which is greater extent in अल्फा हेलिक्स. तो अल्फा हेलिक्स के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की क्षमता है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन बीटा प्लेटेड शीट्स. बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेनी ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो भी होते हैं वो कहाँ पे हमारे होते हैं, दे आर इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो इनसाइड का पोर्शन है, राइट, द हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स जो हैं, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर बीइंग एक्सपोज्ड, राइट, these hydrophobic molecules are being exposed to the hydrophobic side chain, right, of the lipid bilayer. and जो इनसाइड है मेम्ब्रेन के, जो पेप्टाइड बॉन्ड के इनसाइड है वहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से दे आर मोर स्टेबल, राइट, एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट, इजीली इम्बेड हो सकते हैं मेम्ब्रेन में. और एक और वो होता है इनकी एडवांटेज जो होती है, द वन मोर एडवांटेज फॉर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू बी इन, मतलब ये इस स्टेट में अल्फा हेलिक्स स्टेट में होने की वजह से, वो ये क्या रीजन है जो कि स्वयं ने बताया, दैट इज टू फॉर्म द चैनल प्रोटीन्स, राइट, टू फॉर्म द चैनल प्रोटीन्स. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन. तो जो मेजॉरिटी ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, राइट, द मेजॉरिटी ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उनकी जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होती है वो अल्फा हेलिकल होती है, नॉट बीटा शीट्स और समथिंग, राइट. Majority of integral proteins have their transmembrane segment in the alpha helical form, right. वो क्यों होती है, because of the intramolecular hydrogen bonding which is seen in the peptides, because this intermolecular hydrogen bonding is being favored because of the polar nature of the peptide bonds, and this is more prevalent जब पेप्टाइड का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल फॉर्म में होगा, तब ये पोलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की प्रोबेबिलिटी या स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. इसी वजह से द ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट टेंड टू बी मेजरली इन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द चार्जेस, ये पोलर मॉलिक्यूल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उन चीज को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट. द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, हाउएवर पेप्टाइड के अंदर हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि किस टाइम पे होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब ये अल्फा हेलिकल शेप में होंगे. तो अल्फा हेलिकल शेप प्रोवाइड देम द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ देम बीइंग पोलर, एंड उसकी वजह से दे टेंड टू बी इन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट. I hope it's clear now.
May I see some yeses or nos or something like that? Is is it quite something clear कि अल्फा हेलिकल मेजरली क्यों होता है? I'm waiting for your reply, please. यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो पोलर मॉलिक्यूल्स, ये देखो ना यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अंदर की तरफ लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ है नहीं उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पोलर चीज है, इसको न्यूट्रलाइज करना है चार्ज को। वाई? बिकॉज ये जो पेप्टाइड है ये यहाँ अंदर है, इसको अंदर जाना है मेम्ब्रेन के। तो उस चीज को, इस पोलैरिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी आ जाती है। अब ये स्टेबिलिटी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज मोर फेवर्ड ड्यूरिंग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट? बिकॉज डिस्टेंस कम होना चाहिए, राइट, इस चीज के लिए। तो डिस्टेंस कम अगर होगा तो दैट वुड बी मोर स्टेबल। तो इसी चक्कर में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन अल्फा हेलिकल फॉर्म, राइट? हाउएवर, एज आई सेड कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्फा हेलिकल में होंगे। देयर आर सम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि बीटा शीट स्ट्रक्चर में भी होते हैं, जो कि बीटा शीट स्ट्रक्चर में भी होते हैं। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन, जो बीटा शीट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके अंदर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होती, इंट्रामॉलिक्यूलर, आई एम सॉरी, इंटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। दैट मीन्स दो बीटा शीट के बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अगर बीटा शीट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, राइट? अगर बीटा, और ये कहाँ पे दिखती हैं? ये सिर्फ हमको तीन जगह पे दिखती हैं। बीटा शीट ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट जो है, हमें प्रोटीन्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? वी वुड बी गेटिंग दीज बैरल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन ए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, right? Second, we get in the outer mitochondrial membrane, and third, we get in the chloroplast membrane. And the best example for them is the porin, जो water molecules को transfer करते हैं, right? Porins. तो बीटा शीट के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, जो कि सिर्फ इन तीन में ही मिलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट? सो इसका हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के साथ भी रिलेशन में रख सकते हैं, राइट? ड्यूरिंग एवोल्यूशन के टाइम का भी हम इस चीज को रिलेशन में रख सकते हैं, राइट? सो बीटा शीट्स के अंदर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas अल्फा हेलिसेस अगर अगर होंगे तो व्हाट वुड हैपन? इट वुड बी इन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मोर स्टेबिलिटी। बिकॉज ऑफ देम दे आर मेजरली फाउंड इन द अल्फा हेलिकल स्टेट, राइट? ओके, सो ऑल्सो वन मोर थिंग इज, जो अल्फा हेलिस है, जो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, सिंस इट इज क्वाइट स्टेबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ही कोई इसके ऊपर आके बाइंड करता है, राइट? बिकॉज हमने बोला था कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दे एक्ट एज अ रिसेप्टर, दे एक्ट एज सम signaling molecule kind of thing, right? They attract some signaling molecules, right? So transport of solute उन चीजों के अंदर हेल्प करते हैं, राइट? सो जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल अगर आता है, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर देयर इज अ चेंज और कन्फर्मेशनल चेंज, जो एक दूसरे के साथ जो हेलिसेस हैं, दे स्लाइड ईच अदर, स्लाइडिंग इज सीन, right? What we see is, we see a sliding. जब कोई ligand bind करेगा membrane protein के साथ, when membrane protein के साथ any ligand will bind,
what will happen? The alpha helices will slide towards each other, right? Leading to a conformational change. Now, this conformational change is very, very important for transport proteins, for receptor activation and channel को open close करने के लिए. But since beta sheet के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती हैं, right? Beta sheets के अंदर conformational change is not possible because they are kind of static. एक बीटा शीट के साथ दूसरी बीटा शीट के साथ they are kind of interacting with each other. Because of that, what will happen? They will not move. They are kind of static. Beta sheet जो होती है वो static है, right? I'll repeat it in English. जो transmembrane segment के अंदर we know that कि they are majorly found in alpha helices. So one of the major advantage of having an alpha helices as a transmembrane protein is when a ligand will bind to alpha helices for any signal process or anything, there is a conformational change. That is, the alpha helices will slide towards each other. There is a kind of a conformational change, right? That conformational change is very useful for the transport of solutes, activation of receptors like GPCRs we have, channel proteins we have, sodium channel, potassium channel stuff, right? However, in beta sheets, if beta sheet agar hai, so in beta sheets, they are kind of static in nature. They do not slide with each other because of the intermolecular hydrogen bonding. Because of that, they we say that जो pores हैं वो हमेशा open रहते हैं, the porin, right? Porin remain always open, right? Because they are kind of static, you cannot change them. However, जो alpha helices हैं they can be opened on the basis of ligand interaction, right? Ligand अगर आएगा तो they would be opening the channel or they would be passing the signal or something like that. There would be a conformational change. However, beta sheet में there could not be a conformational change because of the intermolecular hydrogen bonding. So this is the reason why we say that pores are always open and channels जो हैं वो open या close होते हैं as per our requirement, yeah, as per the requirement of the cell, right? I hope it's now clear. I explained both in English and Hindi, right? May I see some yeses or nos or something like that? Yes, clear, sir. Thank you. Okay, now we have some types of integral membrane proteins. What are the basic types of integral membrane proteins? So integral membrane proteins can be of two major types. The first one is monotypic proteins, or it can be a transmembrane protein, right? So it can be a monotypic protein or it can be a transmembrane protein. I'm giving the types of integral membrane protein, right? So integral or intrinsic membrane protein can be of monotypic or it can be a transmembrane. Monotypic means they are protruding from only one side, right? Monotypic means they are protruding only from one side of the membrane, from one side only, either from outer membrane or from inner membrane, right? However, जो transmembrane protein है, they protrude from both the sides. That is, they are spanning the membrane. They are passing through the membrane complete. They are passing through the passing or spanning the membrane. Right? They're passing or spanning the membrane. So if I draw the diagram kind of stuff, छोटा सा basic में, so this will be the monotypic protein because it is spanning only the one side of the membrane. Whereas what will be the transmembrane protein? Transmembrane protein would be this, which has N terminal outside and C terminal again inside. So they are spanning both the membranes. So monotypic protein and transmembrane proteins, right? So if I give you the example for monotypic proteins, the best example for monotypic protein is cyclooxygenase enzyme.
right? So cyclooxygenase enzyme is a monotypic protein which protrudes only from one side. That means it वो completely embedded नहीं है membrane के अंदर, right? And cyclooxygenase enzyme, what is the role of COX enzyme? Can anyone tell me? COX enzyme का क्या role है? Yes, prostaglandins. Very good. Anything more? Yes. So cyclooxygenase enzymes, they are involved in, yes, arachidonic acid to prostaglandin synthesis kind, right? So the basic cell responses, they are majorly involved in pain and inflammation, right? Prostaglandin का भी क्या काम है? Pain and inflammation, right? So they are involved in majorly pain and inflammation, and there are various drug targets, right? We have aspirin, जो कि इसको टारगेट करती है, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को टारगेट करती है, right? Okay. The next is the transmembrane protein. Transmembrane proteins are the one which are passing or they are spanning the membrane, right? They are passing through both the membrane, upper outer layer and as well as the inner monolayer, right? Now, it transmembrane protein can also further be classified on the basis of how many segments are being transferred. यहाँ पे सिर्फ एक membrane transfer हो रही है, right? So it can be more than one membrane which are being transferred like this, or it can be either only one membrane which are being transferred, right? So on the basis of how the transmembrane segments are organized in the membrane, the transmembrane segments are further classified into single pass protein or multi pass protein. Transmembrane are further classified into single pass and multi pass. Single pass protein and multi pass protein. Single pass proteins are also called as monotopic proteins. They are also called as monotopic proteins. Monotopic. And multipass are called as polytopic. Polytopic, right? Polytopic. The best example for single pass is glycophorin. Example is glycophorin. Single pass protein. That means the membrane is spanning only one time. There is only one transmembrane segment, right? अब multipass के अंदर क्या हो सकता है? There can be many types of, there can be many segments of proteins which are protruding inside the membrane, right? So again, we can have multipass protein into two different categories. We can divide them. Multipass proteins can further be divided into single subunit protein. We have single subunit protein, or we can have the second one is multi subunit protein. That means more than one protein, or single subunit means जो protein है वो एक ही subunit से बना है, whereas polytopic means मतलब multi subunit means there are more than one subunits which are present inside the protein kind of structure, main structure. So multi subunit, right? So we have single subunit, then we have multi subunit proteins, right? So the example for single subunit is bacteriorhodopsin. That means it is made of only one polypeptide. Single polypeptide is there, right? The example is bacteriorhodopsin. मल्टी सबयूनिट प्रोटीन का एग्जांपल, दैट इज इट इज मेड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो कंप्लीट प्रोटीन का फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? सो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. द एग्जांपल इज बैंड 3 1.
या band 3 protein. The diagram which is shown is for the bacteriorhodopsin. The diagram is for the bacteriorhodopsin which is being shown, right? So it is a bacteriorhodopsin is a single subunit. You can see that ये continuous structure है जिसके अंदर कितनी सारी अल्फा हेलिकल की डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7, right? It has 7 transmembrane segments. Bacteriorhodopsin, right? And multi subunit के अंदर we have example band 3 protein, right? जिसके पास कितनी ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है 6 plus 6. Yeah, GPCR is a single subunit protein. It has 7 transmembrane segment which is a single subunit protein. Absolutely. तो band 3 protein के अंदर कितनी segments हैं? We have 14 segments, 14 transmembrane segments. However, जो total 14 transmembrane segments हैं, they are kind of divided because जो है वो multi subunit में है. More than one subunit are there of that particular protein, right? So in the types of integral membrane proteins, we found out कि it is divided into monotypic and transmembrane. Monotypic means which is protruding only from one side. Transmembrane means it is spanning the membrane, which is passing completely throughout the membrane, which can be further divided into single pass or multi-pass. Single pass means they are protruding only once the membrane, that is only one transmembrane segment. Multi-pass means more than one transmembrane segment, right? A more than one transmembrane segment, that is multi-pass, it can further be subdivided into whether the polypeptide chain is single or there are two different polypeptide chains, right? So if it is a single subunit protein which is only one polypeptide, it is called as single subunit protein, right? Example is bacteriorhodopsin. Or we can have more than one polypeptide which is called as a multi-subunit protein. The example for that is band 3 protein, right? I hope it's clear, everything till now. Shall we move forward? Okay, so the next type is extrinsic membrane protein, right? We have extrinsic membrane protein और peripheral proteins. तो peripheral protein वो हो गए जो कि membrane के अंदर embedded नहीं है, बल्कि they are present somewhat on the membrane, you can say. membrane के साथ ऊपर kind of attach है, right? Someone has asked single subunit and single pass are same. No, single subunit means only one polypeptide, right? अब जो पूरी प्रोटीन की चेन है वो प्रोटीन की चेन जो है वो दो पार्ट्स में भी हो सकते हैं, राइट? इट हैज टू डोमेन्स, यू कैन से, राइट? सिंगल सब यूनिट मीन्स उसकी एक ही सब यूनिट है, दैट मीन्स ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक पर्टिकुलर चेन है, राइट? वो कंप्लीट पूरी की पूरी चेन फंक्शनल चेन है, दैट इज अ सिंगल सब यूनिट. सिंगल पास मीन्स इट इज जस्ट पासिंग वंस. सब यूनिट का और पास का कोई लेना देना नहीं है. सब सिंगल पास मीन्स इट इज पासिंग ओनली वंस, whereas single subunit means the protein is made of only one subunit. That means पूरी जो complete structure of protein है, stable structure of protein है, उसमें complete structure जो है उसमें एक ही polypeptide chain involved है, not more than one polypeptide chain, right? So अगर मैं आपको diagram के थ्रू समझाऊं तो you will be more clear, I guess. So अगर ये मेरा membrane है, right? So if this is the case, so this is single pass. इसका मतलब है सिंगल पास, राइट? अगर ये सिंस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट? अगर अब मैं इसी को ही ये कर दूं, नाउ दिस इज मल्टी पास.
because it is passing the membrane more than once. However, ये दोनों सिंगल सब यूनिट में है, ये दोनों की दोनों क्या है, सिंगल सब यूनिट. Why single सब यूनिट? Because the protein is continuous. N terminal यहाँ से शुरू है, C terminus यहाँ पे खत्म है. It is continuous. Whereas अगर मैं मल्टी सब यूनिट में बात करूं, राइट, मल्टी सब यूनिट क्या होगा? मल्टी सब यूनिट होगा जिसके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज मल्टी सब यूनिट काउंट करेंगे हम उसको. तो उसके अंदर एक ये प्रोटीन है, राइट, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन. वेयरएज दूसरे कलर से अगर मैं बताऊं तो ये दूसरी चेन. तो नाउ वी हैव 1 and 2. हाउएवर दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. स्ट्रक्चर ये कंप्लीट है पूरे प्रोटीन का, लेकिन ये दो चीजों से मिलके बना, टू पॉलीपेप्टाइड से इट इज मेड. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, राइट. आई होप इट्स क्लियर, देवशीष. राइट. Yes, sir. Okay. So now I'll just take, वैसे तो 3 minutes ही हैं. I'll just finish one more kind of protein, that is extrinsic membrane protein. Then I'll stop the kind of class, right? So we have the next category is extrinsic membrane proteins. Can a single pass protein also be a multi subunit? It depends on the protein structure, because single pass protein के अंदर the length of the amino acid, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, वो बहुत छोटी होगी, तो उसके अंदर डोमेन बनने के चांसेस ही नहीं होंगे, राइट, क्योंकि वो बहुत एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल. इट कैन पास द मेम्ब्रेन वेरी इजीली बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर. So there are very less chances of a single pass protein to be multi subunit, because जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसको प्रोटीन को एम्बेड करने के लिए, उसके अंदर होने के लिए, इट शुड नीड सम मोर स्पेस, और मोर स्पेस के लिए वो एडजस्ट करता है, इसीलिए इतने सारे ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स बनाता है. सो देयर आर वेरी रेयर चांसेस. आई एम नॉट श्योर अबाउट कि देयर आर एग्जांपल्स और नॉट, बट एज फार एज आई नो देयर आर नो सिंगल पास प्रोटीन्स which can be multi subunit. Okay, so now we have extrinsic membrane proteins, right, which are peripheral also. You can say peripheral membrane protein. So these are the proteins which are bound to the membrane by electrostatic force. Electrostatic force, right? So they are bound by electrostatic force and hydrogen bonding, right? That means ये अगर यहाँ पे membrane है, तो ये protein यहाँ है, and they are interacting with the lipid membrane, right? They are interacting with the lipid. Attached नहीं है, they are not attached. They are interacting with the lipid membrane, right? Lipid membrane के ऊपर वाले hydrophilic region के साथ they are interacting, and they can be extracted by using solutions जिनके पास high ionic strength होती है, right? So we can extract them by using high ionic solution, by solutions of high ionic strength or pH, right? और ये क्या करेंगे, हाई आयनिक स्ट्रेंथ और हाई पीएच के जो सॉल्यूशन है वो इन इंटरैक्शंस को ब्रेक कर देंगे, और प्रोटीन पार्ट अलग हो जाएगा, लिपिड पोर्शन अलग हो जाएगा. दे डू नॉट इंटरैक्ट विद लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट. जो सॉल्यूशन है वो बस प्रोटीन और इनकी इंटरैक्शंस को ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स अलग हो जाएंगे, लिपिड मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे. दे डू नॉट टारगेट लिपिड बाइलेयर, राइट. लिपिड मॉलिक्यूल्स वुड बी इंटैक्ट, ऐसे का ऐसे ही, जो बाइलेयर है वो वैसे की वैसी रहेगी, राइट. एंड दे आर aqueous in nature, right? Most are soluble in aqueous solution. Most are soluble in aqueous solution, right?
ओके, सो द एग्जांपल फॉर देम इज, द बेस्ट एग्जांपल इज आरबीसीज के अंदर मिलते हैं ये, राइट। आरबीसी के अंदर मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्टडीज आरबीसी में हो रखी हैं, राइट। सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर देम इज स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, एनकायरिन प्रोटीन and band 4.1. These are some of the examples of peripheral proteins which are present on the RBCs, right? Also, जो इनकी इंटरेक्शन है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू हो रही है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रही है। ऑल्सो वी नो कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इम्बेड करें, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, राइट। वो भी यहाँ है ऐसे, राइट, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। तो इनकी जो इंटरेक्शन है, एक तो मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ है। हाउएवर दे आर आल्सो इंटरैक्टिंग विद द हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनके हाइड्रोफिलिक पोर्शन के साथ भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर नॉट अटैच, तो उनको वहां पे खड़े रहने के लिए दे नीड सम वीक इंटरेक्शन। दे आर ऑल बाय वीक इंटरेक्शन, कोवेलेंट इंटरेक्शन कोई नहीं, सारी वीक इंटरेक्शन है। So the peripheral proteins are interacting by three ways. They are interacting using electrostatic force, hydrogen bonding, as well as they are interacting by hydrophilic molecules. They are interacting using hydrophilic portion of intrinsic protein. तीन तरीके की काइंड ऑफ इंटरेक्शंस जो हैं ये शो कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन एंड बैंड 4.1, right? These are all the proteins which are present on the membrane of the RBCs, right? Okay, so what are the functions of these spectrin and carrying and band 4.1? They are majorly involved in mesh work, right? These three protein, all the three, they are majorly involved in mesh work, right? They form a mesh work kind of structure. ये देखो यहाँ पे ये mesh work figure में दिख रहा है, right? So this is a spectrin protein जो कि एक kind of mesh work बनाता है membrane के अंदर, right? उस चीज को, पर्टिकुलर आरबीसी को क्या करने के लिए, शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, राइट। स्पेक्ट्रिन एंड एंकायरिन and band 4.1, all the three, they are found on the membrane of the RBCs forming a meshwork, and they are responsible for shape and flexibility of the RBCs, right? And जो band 4.1 है उसकी एक जीन है, right? राइट, वी हैव वन जीन जो कि बैंड 4.1 को कोड करती है। द नेम ऑफ द जीन इज EPB41, दिस इज द नेम ऑफ द जीन। The gene which encodes band 4.1 is EPB41, right? All the three, they help in providing shape and flexibility to the plasma membrane of the RBCs, right? And जो एनकायरिन है, जो ये एनकायरिन प्रोटीन है, दिस एनकायरिन प्रोटीन इज द मीडिएटर ऑफ स्पेक्ट्रिन एंड बैंड 3 जो हमने इंट्रिंसिक में पढ़ा था, राइट। बैंड 3 प्रोटीन, तो एनकायरिन फॉर्म्स अ नेटवर्क और अ लिंक। एनकायरिन क्या करता है, एनकायरिन इज अ मीडिएटर प्रोटीन, इट इज अ मीडिएटर प्रोटीन between the spectrin and band 3, बैंड 3 जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन स्टेबिलिटी। Yes, I'll explain, Akshit. I'll explain interaction between the extrinsic and integral protein.
तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो है जो कि सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे साइड में बस, दे आर नॉट कोवेलेंटली अटैच्ड, दे आर जस्ट प्रेजेंट ओवर हियर, राइट, at this point they are present and they are interacting with the membrane. So they are interacting using electrostatic force, they are interacting with hydrogen bonding, and वो तो मेम्ब्रेन के साथ है, साथ ही में यूजिंग इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनके साथ दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, जिसकी वजह से जो उनको और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो आई होप ऑल द 3 पॉइंट्स, मतलब 3 तरीके की इंटरेक्शंस हैं, राइट. वी हैव वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, राइट, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करती है, एंड वी हैव अनदर काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन का प्रोट्रूडिंग पार्ट है, राइट, वो भी इसकी इंटरेक्शन में इनकी पेरिफेरल प्रोटीन की स्टेबलाइजेशन में काम करता है, राइट. Any other doubt? So I'll end the class here. If you have any doubts, you can write in the comment section. I'll clear it. Yes, amphitrophic, किसी ने पूछा amphitrophic. Amphitrophic are also classified under this thing only. Amphitrophic जो है वो इसी के अंदर ही आएंगे, peripheral में आएंगे, because they are involved using the weak interactions, right? So they are also involved in this. Same class. Why is the N terminal always on the extracellular space and C terminal on the intracellular space? The N terminal region is generally on the, ऐसा कुछ नहीं है कि always है, it is generally on the N terminal side, जो है वो बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा तरफ बाहर की तरफ इसलिए होता है because of the ligand binding domain. Generally जो ये सारे प्रोटीन्स हैं इनका जो ligand binding domain है, suppose for example if I take for GPCR, तो उनका जो ligand binding domain है which is the signal है, that is present on the N terminal region. So because of that they are present on the outside because ligand को वहाँ bind करना है. Amphitrophic is a kind of protein which are kind of in particular this only, मतलब वो इसी में आते हैं जो GP, they are not a kind of GPI linked anchor. GPI जो है वो covalently attached होते हैं, राइट. यहाँ पे कोई भी कोवेलेंटली अटैच नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफिलिक, वीक इंटरेक्शन है सारी यहाँ पे, राइट. यहाँ पे कोई भी वो नहीं है. एम्फीट्रोपिक इज नॉट एसोसिएटेड विद बाइलेयर, नो, दे आर वीक इंटरेक्शन में, दे आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन विद थ्रू वीक इंटरेक्शंस, नॉट कोवेलेंट इंटरेक्शंस. फंक्शंस ऑफ एनकायरिन, एनकायरिन जो है मैंने आपको बताया इट इज अ मीडिएटर प्रोटीन जो कि दो आपकी साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में आरबीसी को शेप प्रोवाइड करने, ये तीनों के तीनों स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन एंड बैंड 4.1, दे ऑल थ्री आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग शेप एंड स्ट्रक्चर, जो कि आपका बाई कॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, उसको इजीली सो दैट कि वो मूव कर सके इन द ब्लड वेसल्स, राइट, सेल्स जो है वो मूव कर सके, तो उस चीज के लिए मेशवर्क प्रोवाइड करता है अच्छे से स्टेबिलिटी के लिए, साइटोस्केलेटन, राइट, सेल की शेप बाइकॉनकेव. ओके सर, इंट्रिंसिक प्रोटीन हेलिक्स स्ट्रक्चर, वंस अगेन मोर एक्सप्लेनेशन, पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट.
ये ब्रेक करके सेंटेंस लिखा है। ओके, देखो, जो ये जो हमारे इंटीग्रल में प्रोटीन होते हैं, दे आर जनरली अ काइंड ऑफ इन द मतलब दे आर मोर इन्वॉल्व इन अल्फा हेलिकल स्टेट। वो अल्फा हेलिकल स्टेट में क्यों होते हैं? अब सबसे पहले हमको पता है कि वो प्रोटीन है, राइट? जो प्रोटीन की मेजर बैकबोन है वो हमारी पोलर होती है, राइट? इट इज अ पोलर पार्ट, राइट? एज यू कैन सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो इन पोलर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज ये पोलर चार्ज अगर लिपिड में जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि जहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, राइट? तो अब इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में अगर वो प्रोटीन जा रहा है तो उसके पास कुछ चीज नहीं है अपने चार्जेस को न्यूट्रल, बिकॉज वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता अगर बाहर होता, बट अंदर की तरफ वाटर नहीं है, राइट? सो दिस मॉलिक्यूल, ये जो पेप्टाइड है, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इट इज मोर प्रेवलेंट और इट इज मोर काइंड ऑफ, यू कैन से, मतलब ज्यादा अच्छे से काइंड ऑफ बनती है जब अल्फा हेलिकल स्टेज होती है। तो अल्फा हेलिकल अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जितना अच्छा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज डिस्टेंस कम हो जाएगा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजी हो जाएगी। जैसे ही अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजी हो जाएगी, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ईजी हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ईजी हो जाएगा तो इजीली वो दे कैन बी एम्बेडेड इन साइड द मेम्ब्रेन, और दे कैन बी, मतलब अ काइंड ऑफ, दे कैन फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट, द ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन्स जो भी होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दे आर मोर इन अल्फा हेलिकल स्टेट। लेकिन बीटा शीट में भी होते हैं। बीटा शीट में होने की डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई लाइगेंड अगर उनके ऊपर बाइंड करता है तो दे आर नॉट काइंड ऑफ, दे कैन नॉट मूव, दे आर काइंड ऑफ स्टैटिक। बिकॉज ऑफ दैट, जो पोरिन्स हैं जिनके अंदर बीटा शीट दिखती है, दे कैन नॉट काइंड ऑफ मूव ईच अदर, स्लाइड टूवर्ड्स ईच अदर। बिकॉज ऑफ दैट, दे आर ऑलवेज ओपन। हमेशा पोरिन्स जो हैं, ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो उनसे पास कर सकते हैं। वेराज अल्फा हेलिकल के अंदर जो है, जैसे कि जीपीसीआर हो गया या और भी कोई प्रोटीन हो गया, तो उनके ऊपर जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा, ये इंटरेक्शन खराब हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, जिसकी वजह से दे स्लाइड टूवर्ड्स ईच अदर, राइट? जैसी स्लाइडिंग होगी, एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा, देयर इज अ कन्फर्मेशन चेंज व्हिच मेक्स द प्रोटीन एक्टिव, दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर एक्टिव, एंड मे बी जो चैनल प्रोटीन्स हैं, अगर चैनल प्रोटीन्स के बारे में बात करें, तो दे कैन टर्न इट ऑन एंड वी कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाई देयर इज चैनल प्रोटीन जो है वो मोर प्रेफर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन। ये सॉरी, अल्फा हेलिकल शेप इज मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू बीटा शीट्स, राइट? I guess it's clear now. Any other doubts? So from next class, I know when we will be having next class, we will be discussing about protein anchor proteins and further classes, right? In more detail, we will be discussing. So a suggestion. The problem with Google Meet, one thing is that have to admit all the students, because in the previous class we know कि almost around 95 or something students थे, right? And we do not have anything kind of stuff to admit more than 90 people or 100 people, right? तो 100 से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो वो मतलब काइंड ऑफ इट कैन नॉट एक्सेप्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट? क्योंकि हमारे पास जो फ्री सॉफ्टवेयर है गूगल मीट, ओनली एडमिट्स 100। एंड गूगल मीट में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, तो बार बार डिसकनेक्शन होता है, बच्चे बार बार एग्जिट करते हैं, आते रहते हैं, तो उस चक्कर में एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट क्रिएट। सो बिकॉज ऑफ दैट वी थॉट कि यूट्यूब पे हो जाएगा। we'll look into the thing, agar if everyone is comfortable with Google Meet, we'll see and we'll take the class over Google Meet. Akshit and Kritik, they are saying no sir. No sir का मतलब क्या हुआ?
ओके, यस सर, मतलब एग्री करते हैं मेरी बात पे। ओके। ओके, थैंक यू। नो क्वेश्चंस टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मे बी थोड़ा काइंड ऑफ इट वुड बी अ काइंड ऑफ बोरिंग और समथिंग अगर मैं कुछ ना लिखूं, सिर्फ बोलता रहूंगा तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ओके, thank you everyone for joining the live session. We'll see you tomorrow. Tomorrow you will be also having a class from 5:30 same time. Thank you so much. If you have any doubts, you can ask. Do we have 7:30 lecture? No, today you don't have 7:30 lecture. From next week, Monday onwards, you will be having 5:30 to 7 and 7:30 to 9 lecture. Not this week. Yeah, Debashis, it's an amazing subject. I also like that subject. That's why I'm teaching. मेरा favorite है. But this online kind of stuff is creating a problem. सामने हो तो इंटरेक्शन अच्छा होता है, सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है, बट ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है। Rest everything is good. So do like, share, subscribe to the channel, and very very thank you for attending the session. My favorite is also cytology. Thank you so much. To be specific, मेरा favorite cancer biology and cell signaling है. Handwriting is not somewhat understanding. Yeah, because I have to write quite a bit fast because मेरे को ये लगता है कि मैं बोले जा रहा हूँ, I am not writing itself. तो since मैं थोड़ा fast लिख रहा हूँ, because of that it's create a problem. और कोई reason नहीं है. But again, I'll improve. I'll improve my handwriting. No worries. Thank you, Devashish. Okay, if no one has doubt, we can end the session. I'll stop the kind of live session, right? So, okay, if you all have any doubt or anything, you can contact in the WhatsApp group also. You can post it comment section में भी डाल देना. Google Meet, इसके sorry, not that Google Meet. Here in the YouTube section, right? Comment section में अगर आप comment में डाल दोगे तो we'll also solve that query if you have any. And personal पे आप WhatsApp पे पूछ सकते हो if you want to ask on WhatsApp, right? So thank you all very much for joining the session. Thank you so much. Thank you. Thank you.